Hello friends, I am Aastha and I welcome you back to my YouTube channel GRF Achievers. So today in this video I would be discussing 25 American literature questions. It is a practice test cum revision for your upcoming NET exam. I will give you detailed explanation to each and every question in this video, and believe me guys, this video is going to be very useful for all of you. You just need to watch and listen the video carefully till the end. And one more thing, note down all the important key points about the author, their important works and other key points, etc., which we will discuss in this video. Let's start the video without wasting our time, and please like and subscribe my channel if you find it interesting and useful, and also share with your friends who are also preparing for this UGC-NET exam. So let's begin with the first question. First question is, which of the following is a Pulitzer Prize winner work? इस वर्क ने ये प्राइज जीता था. First is A Memory of Two Mondays. Second is American Clock. Third is Crucible. Fourth is Death of a Salesman. So the right answer is option 4th, Death of a Salesman. So this is a work by Arthur Miller. He is an American writer, and this work, through this work he won Pulitzer Prize. And this novel Death of a Salesman, इसका एक protagonist है, उसका नाम है Willie Loman, and he is a symbol of American dream in this work, who want to achieve so much from his hard work. So I am telling about the character, main character Willie Loman, and this play is written by Arthur Miller and it has won Pulitzer Prize. So the next question is, Issac Asimov wrote a science fiction story when he was only, first option is 17 years, second is 18, third is 19 and fourth is 20. So the right answer is option second, that is 18. When he was 18 years old, he started writing science fiction stories. Next question is, one of the following is not a work of Mark Twain. आइडेंटिफाई इट. कौन इनमें से, इन जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वर्क मार्क ट्वेन का नहीं है? सो ऑप्शन 1 इज The Jumping Frog of Kellog's Country. Option 2, The Man That Corrupted Hadleyburg. Option C, Connecticut Yankee in King's Arthur Court. Fourth is The Awakening. So the right answer is option 4, that is Awakening. So I want to tell you that Mark Twain pen name was Samuel Clemens. Okay, so ये उसका पेन नेम था. You should remember this. And also William Faulkner called him the father of American literature. So ये जो छोटे छोटे की पॉइंट्स है, you need to remember these, because काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि who said this और whatever, उसको थोड़ा माउल्ड करके. And this work which is not the right answer, that is the Awakening, जो मतलब जो इसमें से इसका वर्क नहीं है, it was written by Kate Chopkin and it is a work in which Edna, a protagonist, she was struggling between her increasingly unorthodox views. वो स्ट्रगल कर रही थी अपनी लाइफ में इन अपने अनऑर्थोडॉक्स जो उसके व्यूज़ है उनके बीच. ठीक है. सो जो बाकी के फर्स्ट 3 वर्क्स है, दैट आर रिटन बाय मार्क ट्वेन. सो रिमेंबर दीज वर्क्स एंड कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एडिटेड एमिली डिकिंसन्स द सिंगल हाउंड इन 1914? किसने एडिट किया था जस्ट द सिंगल हाउंड? एमिली डिकिंसन का एक वर्क है, किसने इसको एडिट किया था? सो ऑप्शन ए इज़ मार्था, ऑप्शन बी पोली, ऑप्शन सी जेनी एंड ऑप्शन डी फैनी. So the right answer is option A, that is Martha. So I want to tell you that Emily Dickinson died in 1886. Okay, having published only tiny selection of her verse.
in a journal or newspaper, and she left behind this work containing almost 1800 poems. जो ये वर्क है ना द सिंगल हाउंड, इसमें, ठीक है, और हर फैमिली मेम्बर्स बिगेन एडिटिंग एंड कंपाइलिंग दैम फॉर पब्लिकेशन, एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कलेक्शन, जो ये सिंगल हाउंड है, ये उसके बाद पब्लिश हुआ था, एंड इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय हर नीस दैट वॉज मार्था डिकिंसन एंड पब्लिश इन 1914. सो एमिली की डेथ के बाद, दैट वाज इन 1886, एक टाइम जो ये कलेक्शन है ये किसने प्रिपेयर किया था, उसकी एक नीस थी, ठीक है, मार्था डिकिंसन, उसने उसको प्रिपेयर किया एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1914. सो रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, दैट इज हेनरी डेविड थोरो डाइड ऑफ. किस वजह से हेनरी डेविड की डेथ हुई थी? ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन थर्ड हार्ट अटैक, एंड ऑप्शन डी ड्राउनिंग. So the right answer is option B, that is tuberculosis. So Henry David was an American naturalist, essayist, poet or philosopher, and also transcendental. And in May 1862, he died of tuberculosis, with which he had been periodically plagued since his college year. वो college year से ही वो उसको tuberculosis था, but he was died in 1862 due to this tuberculosis. Okay, so remember these points, like American naturalist, he was essayist, poet, philosopher. So remember these things. So the next question is, identify the autobiography of Edith Wharton. Option 1 The Spark, option 2 A Backward Glance, option 3 Here and Beyond, option 4 Mother's Recompense. सो इनमें से कौन सा ऑटोबायोग्राफी थी एडिथ वॉर्टन की? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अ बैकवर्ड ग्लैंस. सो एडिथ वॉर्टन वॉज अ अमेरिकन नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड डिज़ाइनर. ठीक है, वो एक नोवेलिस्ट थी एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक डिज़ाइनर. हर स्टोरीज एंड नोवेल्स वर अबाउट अपर क्लास पीपल सोसाइटी इनटू विच शी वॉज बोर्न. वो अपर क्लास सोसाइटी में बोर्न हुई थी, सो उसकी जो नोवेल्स या वर्क्स थे दैट वर अबाउट द अपर क्लास सोसाइटी, एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ पुलिट्जर प्राइज. ओके, एंड हर वॉर्टन मेमोयर बिगिन विद हर चाइल्डहुड एंड कवर हर लाइफ अप टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. उसका जो ये मेमोयर है उसमें उसने अपने चाइल्डहुड से लेकर अपनी लाइफ को, वो भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक उसने बताया है, उसने बिगिन वहाँ से किया है. एंड इट्स नॉट ओनली अ स्टोरी ऑफ हर लाइफ बट अ पोर्ट्रेट ऑफ हर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड एन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व अ पास्ट द वार हैज़ स्वेप्ट अवे. जो वॉर ने उनकी लाइफ कैसे मतलब वो कर दी थी, उन चीज़ों को वो उन सबको प्रिजर्व करके, द पास्ट जो कि वॉर की वजह से ख़त्म हो चुका था, उन सबको रिवाइव करने के लिए जो उसका चाइल्डहुड था उसने ये मेमोयर लिखा था. ओके, सो दैट वॉज अ बैकवर्ड ग्लैंस ऑटोबायोग्राफी ऑफ एडिथ वॉर्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द लीव्स ऑफ ग्रास, वन ऑफ द क्लासिक ऑफ वर्ल्ड पोएट्री? Option 1 Walt Whitman, option 2 Robert Frost, option 3 T.S Eliot, and option 4 Emily Dickinson. So लीव्स ऑफ ग्रास है वो किसने लिखा था, इसका बेसिक मीनिंग ये है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, that is Walt Whitman. So Leaf of Grass is a poetry collection by American poet Walt Whitman. He was an American poet, because we are discussing about American literature, so I am discussing all the poets, novelists of American literature. So the collection of loosely connected poems represents, जो ये collection है इसके अंदर कुछ poems है जो कि that is a celebration of his philosophy of life. Whose philosophy? Walt Whitman philosophy of life and humanity, and praises nature and individual human role in it. कि कैसे हमारा जो नेचर है और हमारा जो इंडिविजुअल ह्यूमन रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और तो उसकी फ़िलोसफी बेसिकली वी कैन से वो उसमें उसने डिस्कस की है, एंड ही रिवाइज इट मैनी अ टाइम्स अंटिल हिज डेथ.
उसने अपने डेथ तक उसके कितने ज़्यादा बार उसको रिवाइज किया है, उसके एडिशंस हैं। तो ये जो लीजोग्रास है ये काफ़ी फेमस है। So the next question is, who wrote such famous books such as Walden, Excursion, The Meanwood, The Yankee in the Canada? ये बुक्स किसने लिखी है? ऑप्शन फर्स्ट लायन ट्रिलिंग, ऑप्शन सेकंड जॉन रूबन थॉम्सन, ऑप्शन सी बर्नार्ड मलमूड, ऑप्शन डी हेनरी डेविड। So the right answer is option D, that is Henry David Thoreau. So he was an American naturalist and philosopher. I have already told you about this, and a leading transcendentalist. And he is best known for his book that is Walden, ठीक है, and it is a reflection of simple in natural surrounding, and his essay Civil Disobedience, इन दो वर्ड्स की वजह से वो जाना जाता है, दैट इज़ वॉल्डन, एंड सेकंड इज सिविल डिसोबीडियंस। और दीज अदर वर्क्स लाइक एक्सकर्शन, द मीनवुड, द यंकी इन द कैनेडा आर हिज फेमस वर्क। सो रिमेंबर दीज थिंग्स। So the next question is, which novel of John Updike portrays an immature young man who deserts his wife and child in search of glamour and applause of his high school days and as an athlete? ठीक है, सो इसमें ये कोई एक नोवेल है जॉन अपडाइक की, उसमें एक इमेच्योर यंग मैन के बारे में एक स्टोरी है, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। ही इज़ अ प्रोटेगनिस्ट जो अपनी वाइफ और उसको चाइल्ड को इन सर्च ऑफ ग्लैमर एंड अप्लाउज, ठीक है। तो ये एक मतलब थोड़ा उसने ये मैंने एक फ्रेम किया है उसका, मतलब एक तरीके से प्लॉट है इस स्टोरी का। तो वो कौन सी स्टोरी है जिसमें ये सब है? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, जैसे किसी भी नोवेल से ऐसा कुछ आपको पूछ लेंगे, ये प्रोटेगनिस्ट है वो अपनी वाइफ को ऐसे सेल कर देता है, या फिर कुछ भी जैसे, तो ये एक मतलब थोड़ा टेक्सचुअल मैटर दे देंगे आपको। देन यू विल हैव टू आंसर विच ऑफ द नोवेल और विच ऑफ द प्ले इज दिस, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज रैबिट रन, option 2 is rabbit redux, option 3rd is rabbit is rich, and option 4th is none of the above. So the right answer is option first, that is rabbit run. So John Updike wrote rabbit novel series जिसके अंदर he has wrote 6 novels. So यहाँ पे हैरी एंगस्टन इज़ अ रेफरेंस टू रैबिट एंड ही इज़ अ बास्केटबॉल स्टार। सो इसकी जो एक रैबिट नोवेल सीरीज़ है आप लोग देखना एक बार जाकर, एंड उसमें 6 नोवेल्स है, उनमें से 3 तो ये इसमें मैंने ऑप्शंस में ही दिया हुआ है, रैबिट रिडक्स, रैबिट रन, रैबिट इज़ रिच, इसके अलावा भी 3 हैं। देन यू शुड गो बैक एंड चेक दैम। So the next question is, Arthur Miller was a famous post-war period A. poet, B. playwright, C. novelist, and D. critic। जो आर्थर मिलर है एन अमेरिकन, ही वॉज अ फेमस, क्या था वो? पोएट था, प्लेराइट था, नॉवेलिस्ट था, या क्रिटिक था? सो द आंसर इज option 2, that is playwright. So Arthur Miller was an American playwright और एक essayist था, स्क्रीन राइटर था इन 20th century. He was not a novelist, critic or poet, ठीक है, and he wrote several screenplays. Among his popular plays, some of them are All My Sons, Death of a Salesman, जो मैंने फर्स्ट आपको क्वेश्चन में बताया, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जिसमें विली लोमैन इज़ द मेन प्रोटेगनिस्ट, एंड ऑल माई सन, द क्रूसिबल, ये उसके इम्पोर्टेंट पॉपुलर प्लेज हैं। The next question is, which of the following works of Herman Melville is a unpublished and lost? इनमें से कौन सा वर्क हरमन का अनपब्लिश्ड था और फिर बाद में गुम हो गया था? ऑप्शन 1 बिली बर्ड, ऑप्शन 2 मार्दी, ऑप्शन 3 आइसल ऑफ क्रॉस, ऑप्शन डी दैट इज मोबी डिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
So Herman was an American novelist, short story writer, and poet of American Renaissance period. And this work is unpublished and now lost, and it was written in 1853. So the next question is, Ernest Hemingway was greatly influenced by Ezra Pound and option 1 Henry James, option 2 T.S. Eliot, option 3 Gertrude Stein, and option 4 Thomas James Farrell. सो अर्नेस्ट हेमिंगवे दो लोगों से इन्फ्लुएंस था. वन वॉज एजरा पाउंड एंड अनदर वॉज हु. सो इनमें से कौन सा है जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था एजरा पाउंड के अलावा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गर्ट्रूड स्टेन. So Ezra Pound and Gertrude Stein has an influence on Ernest Hemingway. So the next question is, which of the following novels by William Dean Howell is not on love theme? इनमें से कौन सी नोवेल है जो विलियम डीन हॉवेल की जिसमें लव थीम नहीं है? तो इसका मतलब ये है तीन जो ऑप्शन है उसमें लव थीम है और वो विलियम डीन हॉवेल की है, और जो फोर्थ एक जो ऑप्शन हमें ढूंढना है दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लव थीम. सो आपके इसके सारे वर्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको याद भी रहेगा. ऑप्शन फर्स्ट इज इंडियन समर, option second is the lady of Oxtook, option third is an open-eyed conspiracy, and option fourth is women's reason. So the right answer is option 4, that is a women's reason. So William Dean Howell was an American realist, novelist and literary critic, playwright, and he was nicknamed as the Dean of American Letters. ठीक है, और जो इसकी जो तीन ऊपर की नोवेल है दे आर बेस्ड ऑन लव थीम एंड द विमेंस रीजन इज नॉट बेस्ड ऑन दिस लव थीम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलन गिन्सबर्ग वॉज कन्फर्ड अ नेशनल बुक अवार्ड इन 1973 फॉर. एलन गिन्सबर्ग को नेशनल बुक अवार्ड मिला था किस वर्क के लिए? ऑप्शन 1 The Fall of America, option 2 Reality Sandwiches, option 3 Planner News, option D Gates of Wrath. So the right answer is option 1, that is The Fall of America. So Allen Ginsberg was American poet and writer, and he was also member of a Beat Generation group. You know that I have already told about all the movements and groups. So if you have not watched that video, you can go back to my channel and watch that video. That is all about literary movement and group, and it is in two parts, video 1 and 2. So watch both the videos. So I have given about Beat Generation ki what is it, who are the members. So Allen Ginsberg is one of the member of Beat Generation. And Fall of America, that is the answer for which he got National Book Award, is a collection of poetry. Okay, and the content is more overtly political. ठीक है, then most of his previous poetries का जो content है it is more political. So the next question is, Robert Frost was awarded Pulitzer Prize. Robert Frost को Pulitzer Prize कितनी बार मिला था? Option 1 once, option 2 twice, option 3 thrice, option 4 4 times. So the right answer is option 4, that is 4 times. उसको 4 times उन्हें पुलिट्जर प्राइज़ मिला था, एंड ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, और उनको न्यू हैम्पशायर कलेक्टेड पोएम्स, थर्ड इज़ फर्दर रेंज, एंड फोर्थ इज़ विटनेस ट्री. इन 4 वर्क्स के लिए ही गोट 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज. सो रिमेंबर दीज वर्क, न्यू हैम्पशायर कलेक्टेड पोएम्स, अ फर्दर रेंज, अ विटनेस ट्री. सो दीज आर द वर्क्स. So the next question is, who wrote famous novel Invisible Man? किसने Invisible Man लिखी थी? Option 1 Ralph Ellison, option 2 Ralph Emerson, option C Sherwood Eddy, and option D, that is Leon Edel.
So the right answer is option 1, that is Ralph Ellison. So Ralph Waldo Ellison was an American novelist, literary critic and scholar, and he was best known for this novel that is given in the question Invisible Man, and it addresses many of the social issues and intellectual issues faced by American African in early 20th century. जो वो लोग फेस करते थे अफ्रीकन अमेरिकन, वो सब इश्यूज इसके अंदर एड्रेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज As I Lay Dying is a novel that reveals the psychological relationship of a subnormal poor white family on a pilgrimage to busy their mother. सो एक वर्क है दैट इज़ एज अ लाई डाइंग. सो एक वर्क है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं मदर और चिल्ड्रन के बीच में. ठीक है, सो आपको ये वही कंटेक्स्ट बेस्ड है, दैट इज़ द समरी. आपको समरी पढ़नी होगी. कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है अमेरिकन राइटर्स के, ऑथर्स के, जैसे जो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं जिनके आपको सारे वर्क पता होना चाहिए, और उनकी समरी, शॉर्ट समरी, यू कैन राइट डाउन द शॉर्ट समरी ऑफ दीज राइटर्स एंड देयर वर्क्स, जो आपको एट द लास्ट मोमेंट आप पढ़ सको और आपको पता होनी चाहिए मेन प्रोटेगनिस्ट कौन है, एंटेगनिस्ट कौन है. सो इसलिए आपको एक कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन जब भी आपको समझ में आएंगे जब आपको उनकी समरी पता होगी. इन डेप्थ मत जाओ, बट थोड़ा उसको ओवरव्यू तो आपको देखना ही पड़ेगा. सो लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस आर option 1 that is William Faulkner, option 2 Eugene O'Neill, and option C Ernest Hemingway, option D John Osborne. So the right answer is option A, that is William Faulkner. And As I Lay Dying, it is a novel by William Faulkner, and it is a Southern Gothic novel, and it was written by American author William Faulkner. ठीक है, remember this, in 1930. So this novel is a story of death of Addie Bundren and her poor rural family, quest and motivation टू ऑनर हर विश टू बी बरीड इन हर होम टाउन. उनकी जो मम्मी थी या मदर थी, शी वॉन्ट टू बी बरीड इन हर होम टाउन ऑफ जेफरसन. तो क्या क्या उनके जो उनके वो क्वेस्ट होती थी, और या फिर उनके बच्चे क्या क्या करते हैं, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द डेथ ऑफ एडी बंड्रन. ठीक है. So the next question is, which of the following book contain P.L.S. Buck autobiographical narrative? इनमें से कौन सी बुक में P.L.S. Buck के ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स हैं, जिन्होंने उसमें ऑटोबायोग्राफिकल कुछ ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है. सो द ऑप्शन ए इज़ द एग्जाइल, ऑप्शन बी इज़ द लिविंग रीड, ऑप्शन सी इज़ द गॉड्समैन, एंड ऑप्शन डी इज़ अ ब्रिज फॉर पासिंग. So the right answer is option D, that is a bridge for passing. So I want to tell you about the author first. P.L.S. Buck is known by her Chinese name, that is Tsai Zhengzhu, and she was a American writer and novelist, and her work, that is a bridge for passing, is a autobiographical account of a filming of Buck's children book, that is The Big Wave. एक उसका एक चिल्ड्रन बुक है द बिग वेव, उसका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है. ठीक है, ये जो अ ब्रिज फॉर पासिंग और फिल्मिंग ऑफ दिस बुक, दैट इज़ द बिग वेव. तो कंफ्यूज मत होना, जो ये वर्क है अ ब्राइड फॉर पासिंग, इट इज़ अ ऑटोबायो, जो इसकी फिल्म बनी थी एक तरीके से, द चिल्ड्रंस बुक द बिग वेव ऑफ बक, उसका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है. So the next question is, the name E.E Cummings first book which record his personal experiences in French concentration camp during World War First. So जो E.E कमिंग है, उनकी एक बुक है जिसके अंदर उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखे हैं फ्रेंच कंसंट्रेशन कैंप के, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ड्यूरिंग. So the option 1 is Tom, option 2 is him, option 3 is enormous room, and option 4 is no thanks.
So the right answer is option 3, that is enormous room. So I will again tell about the author, that is E.E Cummings. He was an American poet, painter, essayist, author, playwright, and he wrote approximately 2,900 poems, 2 autobiographical novels, 4 plays, and several essays, and he is associated with modernist free form poetry. And his work, that is the enormous room, and it is also known as green eyed stores. सो कंफ्यूज मत होना, इसके 2 नाम हैं. इवन मैं ऑप्शन में ग्रीन आइड स्टोर्स भी रख सकती थी इंस्टेड ऑफ द एनॉर्मस रूम. सो एनॉर्मस रूम इज 1922 autobiographical novel by this poet, that is E.E Cummings, about his temporary imprisonment in France during World War First. उस टाइम उसका imprisonment हुआ था, हाँ, उसका इसके अंदर उसका पर्सनल एक्सपीरियंस दिया हुआ है. So the next question is, which American novelist committed a suicide by gunshot in 1961? किस अमेरिकन नोवेलिस्ट ने सुसाइड किया था गन शूट से इन 1961? सो द ऑप्शन 1 इज पाउल बैकबर्न, ऑप्शन 2 इज इरविंग बेबिट, ऑप्शन 3 इज थियोडोर ड्रेजियर, ऑप्शन डी इज अर्नेस्ट हेमिंगवे. So the right answer is option D, that is Ernest Hemingway. So he was found dead, who Ernest Hemingway, on 2nd July 1961 of the shotgun wound in head of at his home. उसके घर पर उसको ऐसे मतलब उसका वाउंडेड, ही वॉज वाउंडेड, ठीक है. उनकी वाइफ थी मैरी. शी सेड दैट ही हैड किल्ड हिमसेल्फ एक्सीडेंटली वाइल क्लीनिंग द वेपन को क्लीन करते वक्त उन्होंने गलती से एक्सीडेंटली ही किल्ड हिमसेल्फ. सो इट वॉज जस्ट अ एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ मैरी. We can say he committed a suicide by gunshot in 1961, that is Ernest Hemingway. Who among the following is not influenced by transcendentalism? इनमें से कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं है या फिर कौन नहीं है ट्रांसजेंडल पोएट और नॉवलिस्ट? जो भी इनके ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्राउन एल्कोट, सेकंड ऑप्शन इज वॉशिंगटन इरविंग, थर्ड ऑप्शन इज R.W. एमिसन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मार्गरेट फुलर. So the right answer is option 2, that is Washington Irving. So Washington Irving was an American short story writer, essayist, biographer and historian and diplomat of early 19th century, and he was not a transcendental poet और essayist और short story writer, whatever he is, वो नहीं है, वो ट्रांससेंडेंटल मूवमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है. जो बाकी की जो 3 है, ब्राउन अल्कोट, R.W. एमिसन, मार्गरेट फुलर, दे ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रांससेंडेंटलिज्म. So we have to found odd one out in this. So that was Washington Irving. So the next question is, name the playwright who wrote Who is Afraid of Virginia Woolf in 1962. इनमें से कौन से प्लेराइट ने एक वर्क है Who is Afraid of Virginia Woolf वो लिखा है in 1962? ऑप्शन 1 जॉर्ज आर्नोल्ड, ऑप्शन 2 एडवर्ड एल्बे, ऑप्शन सी विलियम स्टैनले ब्रैथवाइट, ऑप्शन डी दैट इज जेम्स ब्राइस. So the right answer is option 2, Edward Albee. So Edward Albee was an American playwright, and his work Who is Afraid of Virginia Woolf, it examines the complexities of the marriage of middle aged couple, that is मार्था एंड जॉर्ज. मतलब क्या क्या कम्प्लेक्सिटी थे उनकी शादी, मतलब किन 2 कपल की, मार्था और जॉर्ज, हु आर द प्रोटैगनिस्ट. इन दोनों की शादी में जो दिक्कतें आई थी या जो कम्प्लेक्सिटीज़ आई थी उनको एग्जामिन किया है इस वर्क में. सो रिमेंबर दीज 2 नेम्स ऑफ कपल, मार्था एंड जॉर्ज.
So the next question is, identify the short story collection by Henry James of the following. इनमें से कौन सा short story collection है Henry James का? Option 1, The Wheel of Time. Option 2, The Spoils of Poynton. Option 3, The Other House. Option 4, Two Magics. So the right answer is Wheel of Time. So others are novels and the Wheel of Time is a short story collection. So the last question of this video is, Bob Smith is a central figure in Eugene O'Neill play title. Bob Smith किस वर्क में या प्ले में एक सेंट्रल फिगर है और वी कैन से प्रोटेगनिस्ट है. So the option is Iceman Comet, option B is Farewell to the Arms, option C is The Hairy Ape, and option D is Cold. So the right answer is option C, that is The Hairy Ape. So the protagonist was Bob Yank Smith, who is a protagonist of the play, and he searches for a sense of belonging in वर्ल्ड कंट्रोल बाय रिच. जो रिच से जो वर्ल्ड था वो रिच से कंट्रोल था, एंड ही वो सर्चिंग फॉर सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन दिस वर्ल्ड. एंड दिस प्ले वॉज इन written in 1922 by Eugene O'Neill, and Bob Yank Smith is a central figure. So that's end of the video. Thank you friends. If you find any doubt in your mind, then you can join my Telegram group, and the link is given in the description box. And also like and subscribe my channel if you need more such quizzes. Thank you again, and keep watching my videos and get intoxicated with literature.